Good morning, children. Hope you all are safe and healthy. In our last class, we already have done chapter number 2, which is Roman numerals. Today, we will start worksheet number 2 based upon Roman numerals. Let us start. First part is knowledge section. Part A, fill in the blanks. First is Hindu Arabic numeral for XLIX is means XLIX के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल बताना है. XL is used for 40, IX it is used for 9 means 40 plus 9 it is equal to 49. Second is Roman numeral for 500 is. Roman numeral for 500 is dash. It is equal to D. D is used for 500 and M is used for 1000. Next is B. Mental maths. First is repetition of Roman numerals means dash. Repetition of Roman numerals means dash means रोमन न्यूमरल की जब रेपिटेशन होती है रिपीट होता है तो नंबर उसका क्या मीनिंग है. फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, सेकंड इज डिवीजन, थर्ड इज एडिशन एंड फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन. सो which one is correct? Answer is addition means part C. Repetition of Roman numerals means addition. There are dash symbols of Roman numerals. How many symbols of Roman numerals? 7, 8, 5 or 9. There are 7 symbols of Roman numerals which are I, V, X, L, C, D and M. So there are 7 symbols of Roman numerals. So 7 is the correct answer. Next is part C, true or false. The symbol V cannot be repeated. Roman numeral का जो V symbol है वो कभी भी repeat नहीं होता. Is it true? Yes, it is true. रिपीट कौन सा होता है? X. सेकेंड इज रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल इज अलाउड मोर देन 3 times. जो भी रोमन न्यूमरल है जैसे X है, V है, रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल इज अलाउड मोर देन 3 times. जैसे I है और X है, क्या ये 3 times ही रिपीट होता है या 3 से ज़्यादा रिपीट होता है? तो ये 3 times तक ही रिपीट हो सकता है. रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल इज अलाउड मोर देन 3 times. सो इट इज करेक्ट. ट्रू. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग. इट इज ऑफ 2 marks. A section, very short answers. First is fill the correct symbol. Less than, more than or is equal to. First is triple times X, I, X means it is 10 plus 10 plus 10 means 30 plus 9 it is 39 and it is 36. So which one is greater? 39 is greater than 36. Next is IX. IX means 9 and on the other side we have 9 also. So which symbol we can use? We can use equal symbol because
both sides are equal. We will place equal symbol. Next is write the Roman numerals for the following. जो नीचे दिए नंबर हैं उनको आपने रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट इज 35. हाउ कैन 35 बी रिटन? 30 plus 5. 30 can be written as 3 times x. X, x, x plus 5. For 5 there is a V symbol. So x, x, x and V means 35. Next is 48. How can 48 be written? It can be written as 40 plus 8. For 40 we can use symbol XL. XL for 40 and for 8 V and I. Triple times I. Next is short answers. Fill in the blanks to make the statement true. Part first is XXIX means it is equal to 10 plus 10 20 plus 9 29. 10 plus 10 plus dash minus 1 means it is I. X means I is smaller Roman numeral and X is larger Roman numeral or greater Roman numeral. So smaller Roman numeral lies at the left of the greater Roman numeral. So we will subtract the smaller Roman numeral from the larger one. Larger is X means 10. Smaller is I means 1. 10 minus 1. So here we place 10. 10 minus 1 means 9. 10 plus 10 20 plus 9 29. 29. Second is XL VII. X is 10. L is 50 means 50 minus 10 it is 40. XL is used for 40 plus V 5 45 plus 2 47. So here we will place 40. आप यहाँ पे 50 minus 10 भी लिख सकते हो और 40 भी लिखा जा सकता है. 40 plus 5 45 plus 2 47. 47. Next is complete the following table. First is Hindu Arabic. Second column is of Roman numerals. 32. 32 के लिए रोमन न्यूमरल क्या होगा? How can 32 will be written? 32 will be written as 30 plus 2. 30 के लिए triple x and 2 के लिए 2 times I. Triple x and I. Next is हिंदू अरेबिक न्यूमरल बताना है किसके लिए? XL V के लिए. And XL is used for 40. V is used for 5. 40 plus 5 it is 45. It is equal to 45. Next is 48. 48 के लिए रोमन न्यूमरल 40 plus 8. 48 के लिए 40 plus 8. 40 के लिए XL. 8 के लिए VII. It is XL VII. Next is Hindu Arabic numeral for Roman numerals. We have triple X V. Triple X. X means for 10. Again X 10. Again X 10 means 10 10 10. 30 plus V means 5. 35. Clear? Next is application section. It is of 2 marks. Means you have choice. First question is
My domus has XVII rooms. X 10, V 5, 15 plus 2, 17. Number of rooms is equal to XVII. Means the number of rooms are equal to 17. I rent VII. Means 7 of them. Of 7 of 17 as shops. कि मैंने 17 में से 7 रूम्स दे दिए रेंट पे, किसके लिए? शॉप्स के लिए. हाउ मैनी डू आई हैव लेफ्ट टू लिव इन? वट विल वी डू? वी विल do this sum by doing subtraction. We will subtract 7 from 17. 17 में से 7 माइनस करना है. 17 minus 7 is equal to 10. How can 10 be written in Roman numerals? 10 means x. So, how many do I have left to live in? I have 10 rooms left to live in. Clear? Next is or. Answer the questions using Roman numerals. First is, आपने ये 4 क्वेश्चन की आंसर रोमन न्यूमरल में देनी है. फर्स्ट इज व्हाट इज योर एज? आपकी एज कितनी है? जितनी भी एज है उसको आपने रोमन न्यूमरल में मेंशन करना है. सेकंड इज हाउ मेनी डेज आर इन अ ईयर? हाउ मेनी डेज आर इन अ ईयर? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं वो आपने मेंशन करनी है, उसको रोमन न्यूमरल में लिखने की ट्राई करनी है. नेक्स्ट इज विच ईयर वर यू बॉर्न इन? आपका बर्थ ईयर लिखना है आपने अपना, कि आपका बर्थ किस ईयर में हुआ था, उसको ट्राई करना है रोमन न्यूमरल में लिखने की. हाउ मेनी आवर्स आर इन 5 डेज? 5 डेज में कितने आवर्स होते हैं वो आप कैलकुलेट करोगे. फर्स्टली you have to calculate how many hours in 1 day, then you will multiply 5 by number of hours in 1 day. तो उसके बाद आप इसको रोमन न्यूमरल में कैलकुलेट करने की ट्राई करना. Solve the application section as a homework. Solve these 2 sums as a homework. I will send its answer by evening. Thank you.